Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you must all be fine and safe at the home. This is your biology instructor Imran Ali. और आज के लेक्चर में हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट सेल. द सेल टर्म हैज़ बीन टेकन फ्रॉम a Latin word that is what kaitos means a hollow space, a cavity, a vesicle, that is what called cell. How we define it? Cell को हम define कैसे करेंगे? What is the definition of cell? Cell is what? Structural and functional unit of life that carry out all the activities of life. यानी कि सेल जो है एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा जो है हमारा सब पार्ट, इसको हम कह सकते हैं कि सब पार्ट है, दैट इज़ व्हाट इज कैरिंग आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ एट बेसिक लेवल. यानी कि लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सेल. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एंड वन थिंग एल्स, दैट्स always cell is basic structural and functional unit of life, because life can even start from a single cell stage, a unicellular stage. That's why we consider it as means के basic unit of life. cell की अगर हम बात करें discovery की, that how cell was discovered, so that in 1590 to trace the discovery of cell, यानी कि सेल की डिस्कवरी के लिए वी शुड हैव आइडिया ऑफ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. तो हमें माइक्रोस्कोप की जो यानी कि इन्वेंशन है उसका आइडिया होना चाहिए. वी शुड हैव दैट हाउ द माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड, बिकॉज सेल इज़ अ वेरी टाइनी मिनिएचर स्ट्रक्चर which cannot be observed with naked eye. We need an instrument like microscope to observe it. That's why cell was observed after the invention of microscope. यानी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद जो है वो सेल को यानी ऑब्जर्व किया गया. In 1590 डेविड जेनसन invented optical lenses. As we know, optical lenses में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? That optical lenses have property to magnify, to enlarge the size of any object. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उसको enlarge करना, that property is present in magnifying glasses, या हम उसको कहेंगे optical lenses. Okay, then these optical lenses were designed to means के form structure a microscope in 1610 by Galileo. He designed the proper microscope by arranging these optical lenses. यानी कि optical lenses को arrange करने के बाद he designed a tube-like microscope that was also having ability to magnify the size of objects. So tube-like microscope was invented by means के Galileo. In 1665, Robert Hooke discovered cell from a section of cork. What he did, he chopped a wooden cork into thin slices and then he observed under a microscope. That microscope was actually designed by himself. यानी कि वो जो माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आफ्टर दी मीन्स के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप ऑफ गैलीलो, द माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक. यानी कि उसने जो है वो प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप फर्दर जो है वो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट की. एंड ही ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क वेयर ही कुड सी that slice is composed of thin hollow chambers. These hollow chambers he named as cell. उन hollow chambers को इन्होंने नाम क्या दिया? cell का नाम दिया. cellula means an hollow space. And according to Hooke, that cell is an empty space surrounded by a wall. Now we call it a cell wall.
यानी कि जो सेल है वो एक एम्प्टी स्पेस है जो कि सराउंडेड है विथ वॉल, दैट इज व्हाट बाय मीन्स के पुट फॉरवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक. So that was the idea of Hooke means के for the cell. In 1805, Lorenz Zuckin believed that all living being consist of cell. In 1809, Jean-Baptiste Lemaitre he stated that nobody have life if it lack cell. यानी कि अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, दैट वी कैन नॉट कॉल इट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते इफ इट इज लैकिंग सेल. इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ही रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस विद इन द सेल. अकॉर्डिंग टू हुक कॉन्सेप्ट दैट सेल वाज एम्प्टी स्पेस. But Robert Hooke in 1835 he confirmed that cell is not an empty space, but it consists of a central part also, that is what called nucleus. In 1838 and 39, Sheldon and Schwann, these two scientists proposed cell theory, and after the means के cell theory many advancement were made, many means के additional points were made to improve the cell theory, and research were further extended after the cell theory. In 1855 Rudolf Virchow he added a point in cell theory that new cells always come from pre-existing cell. तो new cells जो हैं वो हमेशा कहाँ से आते हैं? pre-existing cells से आते हैं. In 1862 Louis Pasteur proved Virchow hypothesis, यानी कि जो hypothesis रोडल्फ विर्चाउ ने 1855 में दिया, that idea was experimentally proved by means के Louis Pasteur in 1862. तो ये हमारी जो है वो कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं. Finally the cell theory was proposed after these means के discussions and discoveries, and what the cell theory explain that all living organisms are composed of cell. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ के कंपोज हैं? सेल के कंपोज हैं. न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो नए सेल जो हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑलरेडी प्रेजेंट सेल से जो है वो अराइज होते हैं, जो कि लुइस पास्चर ने ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में से ये कंफर्म कर लिया था, दैट न्यू सेल ऑलवेज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. So these were the points related with the discovery and introduction to cell, that how cell was discovered, what is the cell theory. In our next lecture inshallah we will discuss further related things to cell. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.